Hey guys, welcome back. I know the stream started late. Setting up all these things takes time. For that, I apologize. So, yeah, today we are going to look at EV sector stocks, and we are also going to look at some of what is really happening with the EV sector industry as a whole. Uske baad, I am also going to talk to you about LIC IPO. I won't go in and do a deep analysis of that, but what I'm going to do is essentially there are some articles that I've read. उनको जो है हम डिस्कस करेंगे. That's it. So maybe जब पूरा prospectus आएगा वो बाद में शायद से we can schedule a video. But right now we will just go do a little bit of small understanding कि LIC IPO है क्या और किस लिए है. Then there is one interesting fact. So if you stay till the end of the video, I will show you one interesting fact that will either make you very angry or it will make you really surprised at the power that these extremely rich, the extremely wealthy folks have, because this is related something to Warren Buffett, and it is, you can say it's more of an insider info or insider trading that happened, but you should know this. You have to know this thing. So with that said, let's start. I will just make sure that the connection is well. Perfect. Yeah, it all looks good. I need to check one thing, however. I just need to check one small thing. Give me a second and I will come back and we will start the whole thing. Okay. Just give me a second. Because I need to know if the sound is getting to you all. If there is no sound, then there is problem. Okay? And we'll start after that. So, 1 second. Perfect. I just went to check. I just had to go and check that if the audio was getting to you guys. So I have seen that the audio is coming. It's all good. So बात करते हैं. We will begin. Let's look at all these electric vehicle sector stocks. Let's look at उसका कैसे जो है. What is the potential of all these companies? And this document is actually made by a good friend of mine, Ayush. I took permission from him to actually showcase this document. And again, shout out to Ayush for making this document. This is not something that I've created. I'm already telling that this is a disclaimer. Also, a very small disclaimer that all of this is for educational purposes. Please do not consider this as investment advice, because you need to do your own research. You need to actually, if you want to make some decisions like that, you should take responsibility for these things. All I can do is I can create awareness. I can educate you in terms of how I think about things, how I do my analysis on all these things. And let's begin. Perfect. So as you can see, my screen is not visible. So the theme for 2022 by Ayush, this is the document that he's created, is for electric vehicles. Why electric vehicles? See, EVs have become more efficient, which is decreasing the total cost of ownership. So पहले जो है IC engines थे, internal combustion engines, that took prominence back in 1900s, 1850s, जिसकी वजह से जो है पूरा का पूरा industry relied upon oil and fuel based combustion. Nikola Tesla, back then when he was during the time of Nikola Tesla, he had introduced something like an electric motor engine. Even Edison tried something like that, but people did not give too much attention to it because it was really bulky. It used to make a lot of sound and it was not something that people were preferring. And oil barons were really opposed to the idea of having electric vehicles as opposed to internal combustion engines, which uses your fossil fuels, oil and basically petrol or diesel का. तो उस वजह से electric vehicles could not take prominence. But today
because of the impact of climate change, people have started to think that electric vehicles are cool. So thanks to Elon Musk for that. He struggled, he survived, he persevered when it comes to doing this thing. He actually went against the norm. He said कि मेरे को एक बनानी है एक electric vehicle company, and I want to actually create an impact in that manner. So because of him, now electric vehicles are also taking a major prominence in India. Now sales of these electric vehicles have also continued to rise. Companies have increased their investments in electric vehicle division. So अगर आपने कुछ stocks के नाम सुने ही होंगे, like Tata Motors had done massive sales last year in 2021, and what we are going to see is that okay, yeah, 1 second. Yeah, so in 2021 we saw that Tata Motors had a massive growth in number of vehicle sales that had. Their two vehicles, Tata Altroz and it's Tata Tiger and it's Tata Nexon, that actually contributed to the maximum of their electric vehicle sales. Government is also continuing its support through subsidies. So if you actually are planning to purchase an electric vehicle, government is also giving you subsidies that go ahead, you are actually making a contribution to for the betterment of climate. So that's why government is also creating all these policies just to benefit में. So ये reasons हैं. Now there are some drawbacks, obviously, because it's a growing industry. There are things that that will require change over a long period of time versus a short period of time. So obviously there are some drawbacks, but we know that this is going to actually develop. We know for that. So so if we start accumulating stocks, we will find it at a far cheaper price because industry is growing right now. ये इंडस्ट्री में लोग आएंगे. हीरो मोटर कॉर्प इज, आई नो फॉर अ फैक्ट कि ना दे आर गोइंग टू डू समथिंग विद Ather acquisition, that they are actually funding Ather more and more, and they will acquire at some point in time. You know that. Similar analogy to crypto, that if something becomes mainstream, we'll invest after that, and then our potential return will be very low. So like crypto, अगर आपने invest किया होता 2017 to 2018 में, then at that point in time prices were really low compared to what they are today. But again, crypto has massive potential, and same going for that. Electric vehicles are going to at least become mainstream in metropolitan cities. आपकी हो गई बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, Delhi. There are people who live in upper middle class and or upper classes. So these are folks जो ना एक तो show off करने के लिए, because it's virtue signaling thing that you can actually go out there and then I'm making a positive contribution to the environment. मुझे नहीं पता, but if you see this show called 2.5 Men. So when Ashton Kutcher was introduced into that show, he actually I don't know if you watched that show. So he was introduced driving a Tesla at that point in time back in 2013, saying that it's cool, it's good for the environment. That's what their entire thought process for owning a Tesla was like. So it's a virtue signaling भी है, लेकिन तुम एक अच्छा काम कर रहे हो environment के लिए. So अगर तुम Tesla own भी करते हो ना, it's a good thing. और सोचते हो कि कोई इलेक्ट्रिक कार ओन करनी है, फायदा ही फायदा है. Now let's look at some of the news that we will actually get to understand कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है and how much is it going to grow. So let's go. Now ये न्यूज़ है, I think it's a pretty old news. और देखो एड्स आने शुरू हो गई, 2 मिनट हुआ अभी एड्स आने भी शुरू हो गई. So this is December 26, 2021 की news है, so almost 2 months old. But Tata Power is installing 1400 EV chargers in Delhi. It's a great news. Think about it like this. So Tata Power का अपना पूरा distribution network है, TPDDL. They have recently announced that they have boosted charging infrastructure in Delhi and its neighboring towns by installing 1400 EV chargers. Addition to that, the company has also said that they are working with NDMC, National Delhi Municipal Corporation, for installing 50 EV chargers at parking slots and marketplaces under the jurisdiction of the civic body. Yeah. Now, TPDDL currently is supplying power to North and Northwest Delhi. So, where I live right now,
The power that supply that we also get is also from TPDDL. The company has stated that it is in the process of developing public and private EV charging infrastructure. Company is looking to increase the charging network in the city to cope up with the increasing EV power demand. तो यहाँ पे मेन बात ये है कि जो ना जितना ज्यादा हम उसके बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे चार्जिंग के, उतना ही ज्यादा उनकी गाड़ी चलेंगी एंड बेस्ड ऑन दैट जो है ना लोग एक्सेप्ट करेंगे कि गाड़ियां ले इलेक्ट्रिक. बिकॉज राइट नाउ जो सबसे बड़ी मेजर वरी है फॉर फोक्स इज दैट कि अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले भी लिया, वो हम उसको बहुत ज्यादा दूर तो ड्राइव कर नहीं सकते. यू कैंट गो ऑन ए 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ड्राइव. यू कैन यूज इट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड because of not having a massive infrastructure for charging these cars, people are scared to take it on long drives. तो अगर आपको यहाँ से दिल्ली से लेट्स से आपको लखनऊ जाना है, मेरठ जाना है, you will not go because उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको एक चार्ज पे शायद से नहीं होगा. You will require multiple charges because of that. Now, two battery swap stations at TPDDL Azadpur and Rohini RG3 grid have been deployed with collaboration with Sun Mobility in the land models. The company Supremo Srinivasan has said that EV chargers will offer services to all types of segments that provide electric mobility. He added that the only thing differentiates them is the type of charging infrastructure configuration. So there will be AC/DC chargers for 2, 3 and 4 wheel vehicles. So AC/DC अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो AC is alternating current. अगर आपने साइंस पढ़ी आपको पता होगा DC is direct current. सो DC में आपको बहुत ज्यादा AC स्लो, आपको बहुत ज्यादा देर तक चार्ज करना पड़ता है. अगर आपको नहीं पता था, DC इज डायरेक्ट करंट जो फास्ट होता है फॉर चार्जिंग, बट इट्स ऑल्सो मच मोर लीथल. तो अगर आपको डायरेक्ट करंट लग जाए, जस्ट फन फैक्ट, बिलीव मी यू विल नॉट सर्वाइव. So TPDDL is a joint venture between government of NCT Delhi and Tata Power company, where Tata owns 51% stake. So Tata के पास पूरी controlling shares हैं. They serve 7 million people in north and northwest part of Delhi. That's it. So ये है पूरी न्यूज. अभी तक हमारे को सिर्फ टाटा पावर के इंस्टॉल्स कितने हैं. Now let's look at something else. TVS वाली, हाँ ये अच्छी न्यूज है. I want to share. बहुत नोटिफिकेशन हैं guys, like you can't believe it. Okay. TVS appoints dedicated technical advisor for electric mobility. So Venkat Viswanathan is an associate professor of mechanical engineering at Carnegie Mellon, has been appointed. So Carnegie Mellon is an Ivy League university in the United States, and they have appointed this mechanical engineer as their technical advisor for the organization. So he has broad expertise in energy storage and lithium-ion batteries, and we are delighted to associate with this. The appointment comes after 2 months after announced. So yes, so यहाँ पे ये important है. TVS Motor Company announced that it will invest 1200 crore, 1200 crore रुपए to set up an e-scooter factory in the Krishnagiri district. I don't know where that is. I have no idea Krishnagiri कहाँ पे है. The investment is mainly for the design, development and manufacturing of new products and capacity in the EV space. So TVS Motor Company, I think, एक सेकंड यार, TVS Motor. Okay, so TVS Motor Company is a Chennai-based company. I had no idea. मैंने कभी खरीदा नहीं, so I won't say anything. TVS is a big brand. अगर आपने उनकी मोटरसाइकिल्स आपने देखी होंगी, बहुत बार देखी होंगी. Okay. I'm excited to associate, this is what actually Venkat Viswanathan said, that I'm excited to associate with TVS Motor Companies to be a part of their vision to build strong EV ecosystem. So everyone out there is betting that electric vehicle segment in India is not only going to grow, it's going to grow at such a massive rate that
going to leave some of the definitions behind. People are creating awareness about it, and all these, really smart people are focused on building these things. Very importantly. So I look forward to working with great company known for its pioneering technologies. Together we will go miles to create more sustainable ecosystem. So Vishwanathan has done, prior to joining Carnegie Mellon, he received his PhD from Stanford, which is another Ivy League university, and postdoctoral studies at MIT. और ये मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो एक ये हमें ये दो चीज मिल गई. अभी हम टीम्स का पता लगा, अभी हमें पता लगा कि टाटा मोटर्स क्या कर रहा है. नाउ let's take a look at another news article here. Green Mobility sells over 10,000 units in December, clocks 101% growth. So जो Greaves Mobility है, I have no idea about this company. मैंने नाम ही आज पहली बार सुना, to be very honest here. Greaves got an e-mobility arm. Greaves Electric Mobility studies that it has sold over 10,000 units in December 2021, with the three-wheelers 101%. So yeah, let's take a look. Ampere by Greaves. Okay. Magnus. Ampere by Greaves. So it is some kind of a company that they have actually built, where okay yeah, so they are also like Ampere by Greaves, a vertical that they have for electric scooters, at least both in E 2 watt and 3 watt segments, and they have grown their E 3 watt business, seeing 101% growth in volume terms. So volume terms में वही है, उनकी जो volume of sales, they have seen 101% in growth. तो मान लो लास्ट ईयर अगर उनका ग्रोथ थी, और ये जनवरी 2022 की बात है, so it's just 1 month old. So for example, अगर इनकी ग्रोथ by 2020 was अगर 100 स्कूटर्स बेचे थे, so they actually sold 201 scooters in total in 2021. So that's good thing, मतलब 100% growth is basically double कर दिया, डबल से भी ज़्यादा. Now, besides the launch variant of Magnus EX gaining preference among consumers, especially in the wake of recent petrol price hike. Now, we know for a fact that all these oil exporting countries, they are not decreasing the prices in spite of rising demand. अगर आपने मेरे previous slides देखे हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे से explain किया था कि all these things, जो key companies हैं which are oil exporting countries, उनको वो अपना प्राइस बढ़ाई जा रही है for exporting oil in spite कि डिमांड ज़्यादा है. They are thinking of their own profits. So इस वजह से people are also very disappointed with the fact that petrol price is decreasing, and because of it, that is actually giving a high prominence to all of these e-vehicles, EVs. With Ampere 2 E2 watt segment has achieved good success. December 2021 sales performance is a testament of the same. And Magnus EX is gaining wide acceptance from customers across the country. So ये रहा Magnus EX. दिखाइए आपको कैसा लगता है ये. Magnus EX, be unstoppable. Get ready for more with Ampere. Okay. So ये कहाँ deliver कर रहे हैं? Okay, so they are delivering a lot of places. Lift magnified. 72,000 की ये स्कूटी है, electric vehicle with an ex-showroom price 72,000. 3 years extended warranty. This beats more performance. 55 km per hour. Magnus X safe city speed. So 55 km per hour की speed है. Powerful hub motor, smooth driving.
strong body design, more comfort, stylish seats. Okay. Anti-theft alarm, remoteless, keyless entry, tubeless tires, attractive colors. तो आपको समझ में आ रहा है मेरे को इनकी मार्केटिंग करनी है एम्पेयर की. इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी एम्पेयर गाइस इफ यू एक्चुअली सी दिस. Okay, yeah. And Tata Motors wants to make EVs mainstream, targets 50,000 annual sales in FY23 2023. चलो टाटा मोटर्स पे आ ही जाते हैं. हमने बात शुरू कर दी. ऑब्वियसली टाटा मोटर्स पे तो आना ही था सम पॉइंट इन टाइम. Okay, so backed by billion-dollar funding from TPG Capital and a new range of models, Tata Motors is taking an early lead in the electric vehicles race. So आप लोगों को पता है, कंपैरिजन दिखाता हूँ मैं आपको, एक चार्ट दिखाता हूँ. 1 second. अरे कहाँ गया? Yeah. So this is my modern intelligence report. I read their reports most of the times. ये प्राइवेट होगी तो now think about it from this aspect. Major players in the EV segment right now are Tata Motors, Mahindra Limited, MG Motor जो चाइना की है, Toyota Kirloskar Motors which is Japanese manufacturing, and Maruti Suzuki. Maruti Suzuki का जो joint venture है with Maruti India's part and Suzuki again from Japanese. राइट नाउ सो ये 5 प्लेयर्स हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं. बट देयर वाज अ ग्राफ जो मेरे को आई होप मिल जाए. यहां पे नहीं है यार. ठीक है. सो लेट मी टेल यू समथिंग. यहाँ पे मेरे को अभी ग्राफ नहीं मिल रहा है. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल इज दैट टाटा मोटर्स हैज बीटन देम बाय अ वाइड मार्जिन. अ वेरी वाइड मार्जिन व्हेन आई से कि दे आर राइट नाउ एक्सट्रीमली पावरफुल इन टर्म्स ऑफ उन्होंने कितना ज़्यादा इस चीज़ में डोमिनेट कर रखा है मार्केट को. और व्हेन आई से कि डोमिनेट कर रखा है, इट्स बाय अ वाइड मार्जिन ऑफ अबाउट 250%. सो टाटा मोटर्स इतनी आगे है कंपेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा इलेक्ट्रिक, बिकॉज दे आर रियली फार बिहाइंड इन दिस रेस. एंड टाटा मोटर्स दैट्स व्हाई विनिंग द गेम. तभी उसके जो स्टॉक रैली हुआ फ्रॉम 2020 द स्टॉक वाज समवेयर अराउंड 10. राइट नाउ द स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट अबाउट 534. एक बार दिखाता हूं यहाँ पे आप लोगों को. $493 पे उनका प्राइस रैली हो रहा है. सो विद इन 2 years देयर प्राइस हैज ऑलमोस्ट बिकम मोर देन 200% ग्रोथ. मोर देन 100% ग्रोथ दिखाई उन्होंने. ओके, मेरे को स्ट्रीम हेल्थ देख लो एक बार. परफेक्ट, कूल. ओके, so their goal is 50,000 annual sales in 2023 for Tata Motors. Company has sounded out vendors with a production plan of 50,000 EVs in fiscal year of 2023.
and scale it up to 125 to 150,000 units annually. If it is able to deliver on the targets, अगर इन्होंने 50,000 EVs deliver कर दिया अगले साल, they would be able to generate a revenue of 5,000 crores for Tata Motors in FY23. Steep valuation, which will justify the steep valuation, जैसे जो है which is sold a stake in the EV business to the PE fund, जो TPG Capital ने उनके ऊपर fund करा. With 15,000 bookings उनके vehicles की and plan of launching 3 affordable cars in the sub 10 lakh rupees range in the coming 12 to 18 months, the maker of Nexon EV is confident of scaling up its early advantage. तो देखो यहाँ पे इन्होंने न्यूज़ दे रखा है इकोनॉमिक टाइम्स ने that FY19 they sold 350 units, FY20 they sold 1300 units, 21 4200 units. So we are seeing a growth in terms of sales की growth हो रही है. FY22 first 9 months it's an estimated figure 10,000, and FY22 उनका goal है 17 to 18,000. They want to hit that goal. Now this business would generate 5,000 crore as I said, and 0.2% of EVs Tata Motors 5.6% share of EVs in December 2021. So apart from that, Tata Motors has come up with all new Tiago EV. Tiago होगी, I am not sure. Sorry. And Altroz hatchback and Punch small SUV, which will be under 10 lakh range. सही है. Which will likely bring new customers over the next 2 years. The EVs are expected to offer minimum of 2,000 kilometers per full charge. Shailesh Chandra, who is the MD of Tata Motors passenger vehicles, said that the company is going to expand into new cities by adding products to increase accessibility. We will be launching 1 or 2 products every year, which will be at different price points, which will increase affordability. Nexon is our core today. So Nexon की ही सेल्स सबसे ज़्यादा हुई है. उनके अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करोगे जो EV सेगमेंट में है, but they want to actually come with other products जो 10 लाख की रेंज से मिडल में है, so that middle class would also consider purchasing a car, because 10 lakh rupees is not a small amount for any person out there, unless and until you earn above 12 lakh, 13 lakh, 14 lakh, 15 lakh as your household income. Then you can say, ठीक है, it works for me, it's good. We will be launching 1 or 2 products every year, which will be at different price points, which will increase affordability. He declined to give any guidance on production or sales plan. ठीक है. And in the first 9 months of FY22, Tata sold around 10,000 EVs and expected at 17 to 18,000. Or the EV share, the company's market share in EV has jumped from 18% in 2019 fiscal year to 82% at the end of FY21. तो ये था. Now यहाँ पे हमने 3 स्टॉक्स देखे जिनका हम अब करेंगे रिव्यू. One would be Cotton Greaves. Second would be Tata Motors. And Cotton Greaves, Tata Motors, Tata Power. ठीक है, ऐसा करते हैं, Tata Motors is overrated. Tata Motors बहुत लोगों ने कर दिया. So we will do Tata Power, we will do TVS Motors, and we will do analysis of Cotton Greaves. तो शुरू करते हैं. आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट देख लिया, ठीक है. So start by Tata Motors. Tata Power, यार क्या बोलता है. So look at the stock. Right now market is down. So उस वजह से if you look at it from 1 year, the company has given a return of 147%. In the last week, because the whole market was going crashing up and down, the stock price actually fluctuated a lot, and on Monday of this week it was at 219, whereas till Friday it went up to 225. 5-year chart. 5-year chart में they have given a return of 164%. So if you had actually purchased this stock, और I think ये 5 years में, हाँ, तो March 8th of March को अगर आपने ये परचेज किया होता 2017 में, it was at 82. Today, like वही अगर हम बात करें, it at 22. So think about the massive gains you would have made. Again,
ऑलवेज लुक एट इट, तुम्हें नहीं सोचना कि इसको जो है ना बेचेंगे ट्रेड करेंगे. यू नीड टू हैव अ लॉन्ग व्यू हराइजन की ना 3-4 साल देखो, 5 साल में उसने इतनी ग्रोथ दी है. इफ यू लुक एट इट कि यहां से 2017 से 2021 तक दे एक्चुअली ग्रो ओनली 10%. 4 साल में उन्होंने सिर्फ जो है 10% ग्रोथ दिखाई. बट इफ यू होल्ड ऑन फॉर थोड़ा सा और टाइम, हमने देखा कि इनकी ग्रोथ हो गई 180%. सो यू नीड टू हैव पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म हराइजन की इफ यू थिंक अ स्टॉक इज गोइंग टू बी फंडामेंटली गुड, only and only then you will get a return on it. There is no substitute for patience. There is no substitute for you having emotional control when you are going to go out there and purchase a stock. So point. Now it's a large cap stock, so it has a market cap of 72,000 crores and ranked at 65. इसका beta high है because it's 3 times as volatile as Nifty, and right now by itself जो निफ्टी है वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है बिकॉज यू नो वी आर सीइंग अ क्वांटिटेटिव ईजिंग गोइंग ऑन. क्वांटिटेटिव ईजिंग के लिए आप अक्षर श्रीवास्तव को रेफर करें बिकॉज ही कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर देन आई कैन. P ratio right now sits at 63, whereas the sector P is at 28.7. So it's far above the sector just जो perform कर रहा है. ठीक है, लेट्स लुक एट फाइनेंशियल्स नाउ. या पीयर्स पे देखें. पीयर्स में आएगा अदानी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड टोरेंट पावर. सो कंपैरेटिवली पी रेशियो में बहुत ज्यादा हाई है विद अ लो डिविडेंड यील्ड. सो ये लोग अभी अपना ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन गिविंग आउट डिविडेंड्स. तो अगर आप यहां पे भी देखो इन द चार्ट, इसको कंपेयरिंग, इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं. कस्टम 2018 से करते हैं, ठीक है. 2 या तो 2018 से 2022 4 साल का हमने टाइम होराइजन लिया एंड वी विल सी कि इट वाज पावर ग्रिड, टाटा पावर वाज डाउन बाय 5% अगर आप February 17 2018 की बात करते हैं. बट ओवर टाइम टाटा पावर ग्रू बाय 165%, Torrent Power grew by 123% and Power Grid Corporation grew by 41%. So अगर आप इसके peers में देखेंगे, we will also see that the stock is growing. What just happened? Perfect. How long have we been? ठीक है, 32 minutes हो गए in the stream. I had no idea. ठीक है, let's go into financials. चलो, पहले income, देन फाइनेंशियल शीट, देन कैश फ्लोज. मेरा ऐसा रूल है. और FY17 से 5 साल का डेटा इज गुड इनफ. नाउ FY 2017 29,000 crores they made their total revenue. Their profit before tax was at 1,400 crores. FY 2018 sales did not grow by a very high amount, 30,700 crores हुआ, तो more likely कि इनका growth हुआ 1,300 crores से. But FY 2019 33,000 crores and FY 20 में एक dip आया. We don't know कि वो dip कैसे आया. So obviously looking at the financial report of the organization is very important when it comes to these things. But again FY 21 में they actually again jumped back up, got to 34,000 crores. It crores में ही है ना डेटा, crores में ही है. एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं. चलो 1,400 crores, 2,700 crores, 600 crores in FY 2019. अगेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की रेवेन्यू में डिप आया. वी डोंट नो किस वजह से आया. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं किस वजह से है. इंटरेस्ट एंड अदर इनकम्स नहीं, Now, their interest and other items जो है ग्रो हुआ. हाँ, their interest और जो expenses है they grew because
because of which their profit before tax FY 2020 का और FY 2021 का कम हो गया. We can see it clearly here. EPS has also declined from 8.7 in 2019 to 3.7, 3.8 in 2021. Dividend payout देखना नहीं मेरे को मजा आता. और मैं छोटा सा एनालिसिस कर रहा हूँ. I have to actually leave for some so कर देना if I'm actually making a small video. Total assets of the organization is 82,000 crores in 2017 and in 2021 it grew to 98,000 crores. So their assets have grown. Their assets have grown 82. यहाँ पे FY 2018 में कम हुई थी. There was depreciation in one asset, but उसके बाद से continuous grow 84,000 crore, 89,000 crore, 98,000 crore. Total liabilities भी देखते हैं. Total liabilities 67,000 crore decreased to 63,000 crore. Almost same रहा 63,000 crore and it increased. उनकी liability increase हुई 67,000 crores में. And again उनकी liability यहाँ पे increase हुई है FY 2021 में. तो इसको एक बार स्क्रीन पर भी देखते हैं to get a more clear data. Okay. ठीक है. So sales standalone and this is yearly. Yeah, perfect. तो इनकी sales growth 2017 में और 2018 में बहुत अच्छी नहीं थी. Sales actually decreased. But 2019 से their sales actually 11% decrease हुई and again 2021 में 11% decrease हुई. That's a good thing. That tells us good things about the company. Operating profit also grew from 5,400 crore to 6,400 crore. So 1,000 crore से उनका operating profit बढ़ा. Operating margins were at 20%. इनका margin जो है stable at right now 18-16%. So वो is not a good thing. मतलब मैं इसको ideally नहीं consider करूँगा कि it's a good thing कि अगर operating margin is at 30-35%, that is the benchmark that I prefer कि एक stock जो है ना उसमें अच्छा perform करे. प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने दिखा दिया था आपको. बैलेंस शीट दिखाता हूं मैं यहां पे. नाउ देयर फिक्स्ड एसेट्स इज दिस. लायबिलिटीज आर एट 103 crores whereas their fixed assets stand at 54,000 crores. It's not a very good thing, but उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग रिजर्व्स ऑफ बोरिंग की. सो in 2017 they had a reserve of 12,000 crores and in 2021 September they had a reserve of 20,000 crores. So इनके पास 20,000 करोड़ रुपए का कैश इन बैंक, कैश इनकी ट्रेजरी में है which they can use to deploy in more growth. But compared to their borrowings, उनकी borrowings भी इंक्रीज हो रखी हैं from 48,000 crores in 2017 to 49,000 crores in September 2021. तो this is also you need to look at कि इन्होंने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है. The company is also under a bit of debt. बहुत ज्यादा नहीं, but again there is debt. Cash flows. Cash from operating activities. Profit from operations. So company का main काम है that is to supply electricity to all households जहां पे भी इनके operations हैं. Their profit has actually increased. 5,900 crores था and has increased to 7,600 crores. So this is good. Cash flow और उसके अलावा इनका अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका जो भी कैश फ्लो बना है अगर देखें 7,000 करोड़ इन 2017 इंक्रीज टू 8,400 करोड़ इन 2021 मार्च. सो अभी जब लेटेस्ट डेटा आएगा मार्च 2022 का then we will also actually do a recap of it. If you like, if you are actually enjoying this video, please your support, थोड़ा सा thumbs up दे दो please. It will actually tell the YouTube's algorithm that you are enjoying this content, and because of which what it happens is it will showcase it to more people that don't know about my channel. So that would be really great for growth. I really appreciate. Thanks. Now net cash flow right now the company has is positive. So they have a positive cash flow. From 2017 it stood at 579 crores and right now in March 2021 it's at 800 crores. So the company has positive cash flow. That's a very good indicator of the stock that
the company is doing good thing with the cash that they have. And what we saw with the news article that I had shown you कि वो इतना बड़ा infrastructure build कर रहे हैं, so they are also going to become a massive cash generating machine. That is the goal over there. Now return on capital, क्या होता था ये रिटर्न ऑन, एक सेकंड यार मैं भूल जाता हूँ इसको हमेशा, इसका नाम आई हैव नो आइडिया. रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडेड होता है वैसे तो, हाँ, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो जो कंपनी ने पैसा डाला उसका जो है कितना ग्रोथ हो रही है. सो दैट इज राइट नाउ इज नॉट वेरी गुड. 10% था 2017 में एंड 2021 में इट्स एट 7%. तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है इन द ऑर्गेनाइजेशन. Let's take a look at promoters. So promoter holding has increased from 2019 to 2021. 33% था 46%. FIIs have decreased. So financial institution investors have decreased from 26% to 10%. And DIIs ने भी decrease करा from 24% to 15%. But public's trust has grown. So public holding has increased from 15% in 2019 to December 2021 में 26%. तो ये था. Now I will also let you know that I have taken a small bit of stake in this organization because I know for a fact that it is going to grow. Look at the 5-year chart, man. Look at the 5-year chart. The stock did not move in April to 2019. In fact, it actually went down. But if you had trust in the organization, अगर आपको टाटा पे भरोसा है, तो अगर आपने होल्ड करके रखा होता from 2020 में, अगर आपने एक्यूमुलेट किया होता, you would have been sitting at a gain of 10 times your gain right now, because 31 rupees से it went up to 240 rupees. Think about it. तुम्हारा almost 10x हो गया प्राइस सिर्फ 2 साल के अंदर. But do not think from a short term horizon. मेरा बस यही आपसे एक विनती है. Now that was Tata. Now let's look for cotton greaves. जैसा था या TVS करते हैं पहले. लाइव स्ट्रीमिंग में क्या है? Okay, yeah. TVS appoints technical advisor. So TVS के ऊपर सर्च करते हैं, TVS Motor Corp, TVS Motor Company. So the current price of the stock right now stands at 664 crores. यहाँ पे भी देखते हैं, ये मिड कैप है. The stock is down by 1 month price. देखते हैं कितना डाउन हुआ है. 3% increase, and if you see the 5%, 55% gain. Not bad at all. So 430 say the stock has given 50% increase, or depending upon at what time you purchase, क्योंकि इसके अंदर dips आए हैं massive, तो आपका वो है. This is a mid cap stock with a market cap of 31,000 crores. And consumer, so टू व्हीलर्स बनाते हैं. टीवीएस मोटर्स, आपने टीवीएस की बाइक्स देखी होंगी. इवन दे आर प्रोमोटेड इन मूवीज में भी उन्होंने करा. टीवीएस स्प्लेंडर आई थिंक, या टीवीएस स्प्लेंडर हो गया. आई डोंट नो मच अबाउट बाइक्स, आई एम सॉरी. इट्स अ मॉडरेट स्टॉक विद वॉलेटिलिटी एज टू टाइम्स दैट ऑफ निफ्टी. सो अगर आप निफ्टी पे ट्रस्ट करते हैं, सो 2 times दैट वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली इज नॉट आइडियल. मैं नहीं बोलूंगा कि जो है एकदम से इसमें जाके पैसा डालो, बट यू शुड लुक एट सेक्टर पीई के कंपैरिजन में द पोटेंशियल देयर इज टू ग्रो इज मच हायर. बिकॉज सेक्टर पीई राइट नाउ स्टैंड्स एट 472 एंड द पीई ऑफ दिस कंपनी इज एट 53. सो कीप दैट इन माइंड आल्सो कि दिस इज वेरी गुड मेट्रिक दैट यू आल्सो नीड टू लुक एट कि द पोटेंशियल जो है इसमें ग्रो करने का बहुत ज्यादा है. सो एक बार देखते हैं, इनका पीयर कंपैरिजन करते हैं. पहले सबसे बजाज एंड हीरो मोटर कॉर्प, ये दोनों फेमस नेम्स है. टीवीएस मोटर कॉर्प कम्स इनटू दैट. सो प्राइस कंपैरिजन करते हैं एंड लेट्स डू 3 साल का कस्टम स्टार्ट डेट. 3 साल अपडेट. सो अगर आपने प्राइस को एक सेकेंड, बजाज ऑटो इन 2019 से इतना इनका जो ग्रोथ हुआ है 2021 में इज दैट हाईएस्ट राइट नाउ इज टीवीएस मोटर सबसे ऊपर चली गई है. हीरो मोटर कॉर्प इज एट डाउन, उसने थोड़ा सा नीचे चली गई है. एंड बजाज ऑटो हैज ऑल्सो गिवन अ गेन ऑफ 29%.
तो बजाज अगेन इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी नेम इन द मार्केट, और लोग ट्रस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली परचेज करते हैं. दैट्स वेरी सिंपल फिलॉसफी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट. मैं इस चीज पे थोड़ा एग्री नहीं करूंगा कि जो है ना, जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो उन्हीं को खरीदो, क्योंकि वी डोंट नो हाउ द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स. अगर वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं बन रहा तो उसे परचेज करके ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार सक्सेसफुल बनेगा. यू मस्ट नो दैट. ठीक है, coming back here, let's look at 5-year chart for this stock now. 5 years ago, on 10th March, the stock stood at 425 rupees, and it was on an upward trend to 770 rupees. तो आप लोगों को almost within 3 quarters आपको अच्छा गेन मिल गया होता if you wanted to purchase it and sell it at that time. I do not believe in that. मेरा होता है कि जो है ना, एटलीस्ट अगर आपने स्टॉक को परचेज करा है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो रखना चाहिए. सो मेरा है कि 10% टैक्स देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, एंड इफ इट्स लेस देन 1 लाख रुपीज देन ऑल द बेटर, क्योंकि आई वोंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन दैट. बट आफ्टर दैट जनवरी इनकी पीक हुई 2017 में, दिसंबर में 770, एंड देन इट स्टार्टेड डिपिंग. तो ये डिप करा टिल 2020, या फिर यहां पे इन्होंने थोड़ा सा दे वर एबल टू स्टेबलाइज टू 352, देन इट अगेन वेंट अप टू 636, एंड तो स्टॉक इज राइट नाउ क्वाइट वॉलेटाइल, क्योंकि इसका चार्ट ऊपर नीचे वाला टाइप का है. सो यू शुड ऑल्सो बी लिटिल बिट स्केयर्ड और मे बी अ बिट अवेयर कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है. नाउ company has given a healthy dividend payout of 26%. So dividend payout of 26% is really good. But promoter holding has been decreasing over the last 3 years. So 2019 से 2022 तक 5% से decrease हो गई है promoter holding. That's not a good thing. Now let's take a look at their sales from 2017 yearly and sale growth percentage. 12,000 करोड़ थी 2017 में, इंक्रीज टू 90,000 करोड़, 7,000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ, एंड इट ग्रू बाय 29%, 30%, 23% एंड -6% इन 2020. तो इनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं है, सेल्स ग्रोथ. इफ इट वाज कंटिन्यूअस एट 20%, आई वुड हैव बीन लाइक कि यार बहुत अच्छी ग्रोथ है, बिकॉज इट्स स्टेबल. यहाँ पे इनकी ग्रोथ इज नॉट रियली दैट स्टेबल. यू मस्ट एक्चुअली कंसिडर दैट फैक्ट कि देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से डिप हुआ. सो यू नीड टू लुक एट मार्च 2022 की आपको एनुअल रिपोर्ट देखनी होगी, बिकॉज इट विल गिव यू आइडिया कि कैसे हुआ ये चीज. परफेक्ट. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना यार. एक सेकेंड. ओके, सॉरी, 1 सेकेंड. परफेक्ट. सो ये है सेल्स. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ग्रोन फ्रॉम 871 करोड़ टू 150 करोड़, 1,500 करोड़ टू 2,100 करोड़, 2,200 करोड़ तक इनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है. दैट्स अ गुड थिंग. So operating margin right now stands at 7%, 10%, 10%, 11%. So इनकी ग्रोथ जो ऑपरेटिंग मार्जिन है प्रॉफिट के, वो 10% अबाउट स्टेबल हो रखे हैं. सो यू नीड टू लुक एट फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट कि इस पे आप कितना इसमें पैसा डालोगे और कितना आपको ग्रोथ मिलेगी. एंड इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. सो अगेन यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग. एंड दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, यार प्लीज बोल रहा हूँ, नन ऑफ दिस इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट एडवाइस. एक्सपेंसेस देखना जरूरी होता है, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी. सो प्रोडक्ट में बनाने में उनके जो है ना रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, दे नीड टू हायर इंजीनियर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका प्रोडक्ट कहां से, मतलब कि क्या क्या चीजों की उनकी कॉस्ट है. नाउ देयर मटेरियल कॉस्ट हैव डिक्रीज फ्रॉम 72% टू 67%. ठीक है. एम्प्लॉय कॉस्ट इज समवट स्टेबल एट 7 to 9%. तो इनका यानी कि हाई एट्रिशन रेट नहीं है. द एम्प्लॉयज में बी वर्किंग एट द ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी, एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 1% ओनली. सो दैट्स ऑल्सो गुड. सो इनकी जो मेन कॉस्ट है कम्स फ्रॉम मटेरियल्स. इफ दे आर एबल टू लाइक यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल मॉडल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि you are able to manufacture a lot
if you are able to like get a maximum high volume order, बहुत सारे आपने स्कूटर्स बनवाए, बहुत सारी आपने मोटर बाइक्स बनवाई, एंड बेस्ड ऑन दैट फैक्ट अगर आपको एक ज्यादा सस्ता मिल रहा है, रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती मिल रही है, दैट वे यू कैन एक्चुअली स्केल योर बिजनेस वेरी इफेक्टिवली. दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो इफ दे आर एबल टू डू दैट इफेक्टिवली, दे विल बी एबल टू मेक अ उनकी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे एंड उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज इन दैट केस. So net profit देखते हैं. Net profit right now from 2017 was at 511 crores and it has not increased much. It has remained at 594 crores. लेकिन they had a massive profit in 2019, तो उनकी ग्रोथ अच्छी हुई वहां पे. So 10 years में अगर कंपाउंडेड ग्रोथ देखनी है, आपको 16% इस स्टॉक में आपको ग्रोथ मिली है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड नो, स्टॉक प्राइस में 29%, विदिन अगर आप 10% इस स्टॉक को होल्ड करके रखा होता, यू वुड हैव गॉटन 29% ग्रोथ, व्हिच इज ब्यूटीफुल, व्हिच इज रियली ब्यूटीफुल. अगर आपने 29% ईयर ऑन ईयर इस चीज को हेल्ड करके रखा होता. कंपाउंडेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ग्रू बाय 16% over 10-year period. That is not bad. Not bad at all. So company profit बना रही है. And return on equity in 10 years has been 22%. Even when it was 5 years old, it was at 22%. That's a very good indicator कि stock क्या कर रहा है. Balance sheet में मेरा again same चीज, reserves and borrowings. 2017 they had reserves of 2100 crores. 2021 September they have a reserves of 3900 crores. ठीक है, so their reserves have grown. So जो कंपनी का कैश आ रहा है वो also they are also saving it for any kind of future expense that would come in. But also need to look at the fact कि इनका borrowings भी जो है increase हुई है. देखो यहाँ पे 2017 में their borrowings was जो loans and debt होता है कंपनी पे 1300 crores था. But in September 2021 that is up 9 times at 9800 crores. तो वो चीज का भी आपको इंडिकेटर रखना पड़ेगा दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग कि कंपनी का ऊपर लोन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. सो दे आर आल्सो टेकिंग ऑन डेट. सो दे आर आइदर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको उसके लिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़नी बहुत जरूरी है. आई एम नॉट डूइंग दिस इन दिस वीडियो, बट मैं जब खुद के लिए मैं एनालिसिस कर रहा होता हूं, आई ऑलवेज डू दिस कि मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जरूर पढ़ूं, क्योंकि कंपनी आपको इन्फॉर्म करती है उसमें कि क्या क्या होने वाला है इस स्टॉक में. दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो 2017 में इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था 689 करोड़, बट 2019 में इट नेगेटिव एंड इट वाज एट -918 करोड़. तो ये मेरे को देख के आई लूज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रस्ट. मेरी फेथ हिलती है कंपनी में कि क्या कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने क्या किया. इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखना जरूरी होता है. March 2020 में they again recovered. They actually had a cash flow of from operations आपका 317 करोड़ 370 and it increased to 1150 crores in March 2021. ठीक है, so कंपनी ने कैश फ्लो बनाया, but profit from operations has grown continuously. So 924 करोड़ से 1500 करोड़ पहुंचा है इनका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. दैट्स अ गुड थिंग कि कंपनी का जो प्रॉफिट है they are able to make some kind of a profit off of this thing. Shareholding pattern, as we saw, has decreased by 5%. 2019 में it was 57% promoters were holding it. 2021 में 52%. But 50% से above promoters hold करते हैं. It's a good thing. So some people have sold their equity. We can't do anything about it. FIIs have decreased their holding by 3% because it was at 15.9% in 2019. 2021 December 12%. DIIs on the other hand have increased their holding. 15% ही था इनका भी, लेकिन in 2021 December they increased it to 25%. So 10% increase हो गया. And public holding has remained relatively stable, या थोड़ी सी कम हुई है 10% से 9.4% तक. Will I consider purchasing this stock? No, I will wait. I will wait and watch what is going to happen. कोई नई न्यूज आती है कंपनी की, I will look at that. And then I will see कि क्या करना है. All I'm doing this कि मैं आप लोगों के साथ सीख रहा हूं. I'm doing my research and I'm sharing all of that I'm learning. मेरा गोल ये है इधर. Okay, and coming to last stock here.
Crompton Greaves. So यही कंपनी है ना, Crompton Greaves Electric Mobility. देखता हूँ एक बार इस who owns Greaves Electric Mobility. Greaves Limited are owner of this company, and okay, they own the Ampere Electric brand, but उसके अलावा they also, to look at the picture, Best Way sells e-rickshaws. So ये e-rickshaw भी बेचते हैं. मैं वही सोच रहा था, इन्होंने बोला 3 व्हीलर्स ना, 3 व्हीलर्स के दिमाग में मेरे आया कि 3 व्हीलर्स कौन सी है. So e-rickshaws are also, they have acquired e-rickshaw company called Greaves Electric Mobility. तो इनका बिजनेस यहाँ से भी आया. That's really interesting. I was not sure of that. ठीक है. So Greaves Cotton Limited. Okay, let's look at the 1 year chart first. 72% gains. Nice. So, February 19, 106 rupees was the price, 2021 में. At its peak in 2022 January में, it was at 249 rupees. That was its peak. Right now, फिर वहाँ से जैसे जनवरी में मार्केट गिरनी शुरू हुई, we see that stock price has come down to 183. 5 year chart 11% है. So the stock was normally, looking at this time frame, यहाँ से लेकर इनका कुछ ज़्यादा गेन नहीं था, लॉस ही रहा, या मतलब 16% से डाउन था स्टॉक. फ्रॉम 2017 टू 2020 में सारा का सारा नुकसान हुआ कंपनी को, बट सिंस देन दे हैव एक्चुअली ग्रोन. सो अगर आपने इसे डिप पे परचेस किया होता, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम 2 ईयर होराइजन. 8 रुपीज पे ट्रेड करा था इन अप्रैल 8 जब पूरा लॉकडाउन हो गया, बिकॉज लोग बाहर ही ट्रैवल कर रहे हैं. प्रोडक्ट बिजनेसेस आल्सो सफर्ड बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग आउट देयर. वहां से आपने 119.8 230% का गेन होता आपको विद स्टॉक प्राइस सिटिंग एट 160 रुपीज. तो देखो यहां पे 67 रुपीज, 67 से 120 तक चला गया. You would have been sitting on a massive gain. This is a small cap stock with a market cap of 4,000 crores. So from that perspective, I'm like, should I invest in the company? Because small caps are something that I not ideally look forward to. मेरा goal रहता है to actually invest in companies which are ideally small cap on the way to becoming mid cap. We'll do analysis on that. And mid cap becoming large cap. That's how you see. Company because small caps are something that I not ideally look forward to. मेरा goal रहता है to. Okay. Perfect. Like कर दो यार वीडियो if you are actually enjoying all this thing. Greaves Cotton. So, okay. 5 year chart यहाँ पे भी देखो 2017 से 2020 3 साल तक स्टॉक नहीं मूव करा. डिप हुआ 2020 में, और सिंस डिप इट एक्चुअली वेंट अप. इट हैज शोन ग्रोथ, और अभी वो अगेन मार्केट करेक्शन की वजह से इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज. एंड बेस्ड ऑन द न्यूज दैट वी गेट फ्रॉम द कि इसकी क्या न्यूज आ रही है, हमें पता लगेगा कि कंपनी का क्या है. द ओनली प्रो दैट वी आर सीइंग इज दे आर ऑल मशीन जनरेटर. सबसे पहली बात तो द कंपनी इज डेट फ्री कंपनी का मतलब है कि इनके कोई लोन नहीं चढ़ा हुआ. जो इनके लोन थे उन्होंने उतार दिए. सो कंपनी हैज गॉट टू हैव मोर कैश इन बैंक. सो इनका रिजर्व्स हमें बताएगा क्या होता है वहां पे. नाउ सेल्स, एनुअल सेल्स 5 साल का देखते हैं. 2017 में देयर सेल्स वाज 1600 करोड़ एंड ओवर टाइम इट हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड. सो इट एक्चुअली वेंट अप इन मार्च 2020 में इनकी सेल्स इंक्रीज भी हुई 1900 करोड़ पे, बट फ्रॉम देन मार्च 21 में इनकी वापस आ गया एट 1500 करोड़. और टोटल ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो लास्ट 12 मंथ्स का जो इनका सेल्स ग्रोथ है इज एट 1609 करोड़. सो मतलब सेल्स तो हुई नहीं है, या फिर ऊपर नीचे देयर इज मैसिव फ्लक्चुएशन देयर. एक्सपेंसेस देखते हैं. देयर एक्सपेंसेस एक्चुअली
were 1300 crores in 2017 and 2021 में 1400 करोड़ ही है. 1400 करोड़ आया. So बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया इसमें. But you should also look at it from this point कि एक सेकेंड. करोड़ ही है. Okay, so I was saying यहाँ पे. So again, because it's a manufacturing company product है, तो इनकी material cost जो है ना high है. 64%, 72% इनकी material cost increase हुई है. Employee cost is stable. 10% पे इनकी employees की cost है. And employees cost are salaries, bonuses, जो factories होती हैं, factories में जो workers काम कर रहे हैं, उनका looking at their healthcare and all these things. These are the costs. So वो ज़्यादा अच्छी नहीं है वहाँ पे. Manufacturing cost is also pretty low at 2%, से 2% or 4% हुआ है. ज़्यादा कोई difference नहीं है. However, on operating margin, so operating profit margin जो है इनका वो बहुत ज़्यादा increase नहीं हुआ है. In fact, वो decrease हुआ है. Look at it. Operating margins, profit margin was at 15% at 2017. 2021 तक आते आते it was at 5%. तो इनका margins decrease हुए हैं. यानी कि company जो है they are losing their profit to something, and this is most likely because, and again I'm just speculating here, is based off of the fact that these are the material costs of the company. उस वजह से we are seeing that this may be happening. Net profit of the organization has been from 2017 से 180 करोड़ से नेगेटिव हो गया इनका करोड़. Not a good indicator about the stock. So इसके आगे मैं बात करूं नहीं करूं मेरे को नहीं लगता करनी चाहिए मुझे, क्योंकि देखो इनका प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो रहा है. तो आपको प्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किस वजह से इनका प्रॉफिट डाउन हुआ है, किस चीज में इन्होंने अपना पैसा डाला है कि इनका प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया. दे एक्चुअली बिकेम अ लॉस मेकिंग कंपनी, येट दे आर डेट फ्री. तो या तो इन्होंने अपना डेट उतार दिया, इन्होंने अपना सारा प्रॉफिट जो बनाया था इन्होंने उस पर डेट उतार दिया, या इनकी सेल्स ग्रोथ हुई ही नहीं इतनी कि इनका डेट है. कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 10 years हैज बीन नेगेटिव 12%. तो अगर आपने 10 साल पहले पैसा डाला होगा आपके प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं आया, बिकॉज इट हैज ओनली गिवन यू 10% इंक्रीमेंट. 8% जो है आपको इंक्रीमेंट हुआ होगा आपके 10 साल के टाइम फ्रेम पे. लेकिन अगर आपने यही स्टॉक 1 साल पहले लिया होता, यू वुड हैव गॉटन एन इंक्रीमेंट ऑफ 72% ऑन दैट स्टॉक. रिजर्व्स, तो इनकी बोरोइंग्स हो गई है 2014, 2017, 2018 तक इनका कोई बोरोइंग नहीं थी, जीरो लाइबिलिटी. एंड 2019 से दे एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग मोर लाइबिलिटीज एंड उन्होंने बोरिंग्स ली. सो 2019 में इट वाज एट 11 करोड़. 2021 सितंबर इट्स एट 42 करोड़. सो इन्होंने अगेन दे हैव स्टार्टेड बोरिंग मनी फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम डेटर्स, वी डोंट नो येट एट ऑल. Reserves have increased a little bit from 2017 to 2019. 800 से 920 करोड़ हो गया था. बट देन 2020 में और 21 में जो है इनका डिक्रीज हो गया. 750 to 690 करोड़ तक इनका रिजर्व्स पहुंच गए. वुड आई एक्चुअली कंसिडर दैट? नो, आई विल नॉट, बिकॉज वो नहीं है अच्छी बात. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं. सो इट्स 2017 में 114 करोड़ और कैश फ्लो 2021 में 140 करोड़. ओके, इट हैज नॉट ग्रोन अ लॉट. या इट हैज नॉट ग्रोन अ लॉट. मतलब बेसिकली इन्होंने कितना परसेंट का गेन दिया हमें? 30% का इन्होंने गेन दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. सो इनका जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देख के हमें पता लग गया 240 करोड़ था 2020 में 215 करोड़ हो गया एंड 63 करोड़ हो गया मार्च 2021 में. सो दैट्स नॉट वेरी गुड थिंग. और नेट कैश फ्लो अगर देखा जाए कंपनी का तो दैट हैज इंक्रीज्ड. 2020 तक द नेट कैश फ्लो ऑफ द कंपनी हैड इंक्रीज्ड. यहां पे देखो 2 करोड़ से 116 करोड़. ओके, या गुड. तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, शेयर होल्डिंग पैटर्न इज इंक्रीज. प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है, गुड थिंग. FIIs ने पैसा निकाल दिया है. सो जो म्यूचुअल फंड हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा निकाल दिया. 14 से 3% पे आ गया. DIIs ने भी सेम 15% से 9% पे इन्होंने 6% से डिक्रीज
but public trust has grown 18% to 31%, 2019 to 2021. So because we saw that stock gave us return of 72% in the last 1 year, based on that, maybe people started investing more of their money in this, because 2019 we saw that there was a little bit of dip and it actually went up from that. So उस वजह से I think जो है public का trust उस पे आया. Would I consider, मेरा opinion है, I'm not giving it investment advice, would I consider taking a stake in this company? No. मेरी तरफ से I'm not. मेरा ये रूल है. जहां तक LIC IPO की बात है, चलो अब LIC IPO करते हैं. Read that. थोड़ा हमें आइडिया लगे. I'm not giving it investment advice. Would I consider taking? चलो. So LIC IPO कहाँ है? 2 साल से वेट करिए मैंने इसकी. February 16th, ये लेटेस्ट है क्या? या लेटेस्ट है. So LIC is the largest life insurance company in India. आप लोगों को पता होना चाहिए. And they actually had a monopoly in the market from. They had a monopoly till एक सेकंड यार. चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ. सो आई थिंक इट वाज टिल 2006 जो है कोई भी मार्केट में एंटर करा नहीं था. LIC ने लाइफ इंश्योरेंस की थी एंड दे आर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑल्सो. सो इनके पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी बहुत मैसिव है. अबाउट कितनी है? या 30, ओ माय गॉड, 39 बिलियन रुपीस. 39 बिलियन रुपीस की इनके पास जो है assets under management है, because of the money that they have. So पहले की मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे. 2006 से पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वर नॉट एक्चुअली मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. .com क्रैश हुआ था, उस वजह से लोगों की नौकरियां चली गई थी. .com बबल जो बस्ट हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, हमने देखा कि पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड सम पीपल, जो भी नुकसान हुआ उस वजह से लाइफ इंश्योरेंस इम्पैक्टेड. एंड ड्यूरिंग 1970s to 1990s, there was this period of war going on. There was Cold War going on between United States and Russia. Russia at that time was called USSR. So war में जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस की जो है पॉलिसी की जो है ना, क्योंकि हमारी लाइफ को मोर अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हो, you might die for your. So लाइफ इंश्योरेंस का तुम्हारा बनता, तुम्हारी फैमिली अगेंस्ट वो कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमाती क्योंकि तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं हो जाती है. सो इट केम आफ्टर दिस थिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली लुक एट ऑल दिस एंड आल्सो दिस जिसका ये बिकॉज़ क्रेडिट गोस टू दिस पर्सन जिसने ब्लॉग लिखा है. अबाउट LIC at this point now. LIC is India's sole government insurance provider. It is the largest firm in Indian insurance industry. Market share 64% in terms of premiums and market share of 66% in terms of new business premium. The firm provides participating and non-participating insurance products such as unit-linked insurance products, term insurance products, health insurance, and saving insurance with an annuity and pension products. Assets under management मैंने बताया 39. एक सेकंड यार, कितनी है ये, मेरे को नंबर 30 UN. Oh my god, it's not billion. It's not billion. It's 39 trillion. It's 39 trillion as of September 2021. Operations देखते हैं. Now the firm has 8 zonal offices in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Kanpur, Patna, Bhopal, Hyderabad. कुछ इनमें metropolitan cities हैं and कुछ tier 2 cities. Company has branches apart from it. 2000 branches हैं, 113 divisional offices and satellite offices जो होते हैं, moving offices जो ज़्यादा एक तरफ रहते नहीं है. These are 1500. And it is also present in Fihi,
फीजी या फी ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, यूके। और इनका एजेंट नेटवर्क बताऊं आपको, 1.35 मिलियन, 13,50,000 लाइफ इंश्योरेंस इंडिया एजेंट्स हैं इनके 2021 मार्च में, जो लाइफ इंश्योरेंस इनकी सेल करते हैं। नाउ द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इट्स अ पब्लिक, नॉट पब्लिक कंपनी बट इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। तो जो है द होल प्रोसेस ऑफ की LIC का IPO आ रहा है, द कंपनी इज फोकसिंग ऑन disinvesting their assets in the organization and giving more control back to private players. तो गोल ये है कि पब्लिक इसका जो है ना a percentage of the company भी रखेगी, and government is not going to look at operations of the company. Government को मतलब नहीं है, we are seeing that from the budget as well, कि वो जो है कॉर्पोरेट प्लेयर्स को बोल रहे हैं कि आप जो काम करते हो, आप अच्छा काम करते हो, आप इस चीज को चलाओ, हमारा काम है पॉलिसीज बनाना और जो है नेशन को संभालना, हम कंपनी से चला सकते हैं। सो दिस इज मुद्दा मुद्दी बहुत छोटे में बता रहा हूं, दिस इज जस्ट इन लेमन्स टर्म, ताकि आप लोग समझ पाओ। नाउ LIC IPO consists of an offer for sale. So they are selling 316 million share. Yeah. 316 million shares. इसका मतलब हुआ 31.6 करोड़ शेयर लोग सेल कर रहे हैं, and listed on NSE BSE. NSE BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE पे होगा। Now these are investment managers, investment bankers, जो इसका कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरा IPO का जो होगा। कोटक महिंद्रा, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स प्राइवेट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ICICI, JP Morgan, Nomura Financial Advisory, SBI Capital, SBI Markets Limited. And the issue का जो रजिस्ट्रार है इस केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो जिस नाम पे रजिस्ट्रेशन हुई है, जो रजिस्ट्रार जिसके अंडर हुआ है, दैट इज केफिन टेक्नोलॉजीज। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होगी, उसका जो बेनिफिट होगा, दैट इज गोल। टू ऑफर जो है मतलब स्टॉक होल्डर्स को जो है ना सेल करनी है 31 करोड़ शेयर्स और जनरल कॉर्पोरेट। सो फाइनेंशियल्स देखते हैं, आ जाओ। 2019 से 2021 के हमारे पास फाइनेंशियल्स हैं। देयर एसेट्स स्टूड एट, ओ माय गॉड, 33 लाख करोड़। तो 2019 में दे हैड 33 लाख करोड़ assets, and 2021 September में they got to 40 lakh crore in assets. Revenue has actually decreased a bit because 2020 में a lot of people lost their lives, because of which the life insurance industry took a hit, and which is why the revenue has seen a dip कि 2600 करोड़ था, then 2700 करोड़ इंक्रीज हुआ 2020 में, बट अभी लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ था, इंडिया में नहीं आया। 31 मार्च 2021, एक साल बाद पैंडेमिक के, द नंबर एक्चुअली ग्रू टू 2900 करोड़, क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए जो मार्केट में आए उन्होंने भी लाइफ इंश्योरेंस खरीदा। बट लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के बाद उसका जो प्रीमियम होता है, दे ऑल्सो लाइक लॉस्ट ऑन दैट, बिकॉज 31 मार्च के बाद जो है जब सेकेंड वेव आई, वी सॉ this massive loss of life that happened, जिन लोगों का नुकसान हुआ, people lost so many of their family members, my heart goes out to you, rest in peace. And again उस वजह से इनका revenue dip हो गया 1500 crores in as of September 2021. Profit after tax has also decreased from 2600 crores to 1500 crores. Now who are they competing with? SBI Life Insurance, HDFC Life Insurance, ICICI Prudential Life Insurance Company. These are their main competing players जिसके साथ ये करेंगे. But you should also know that it is the biggest market share. उनके पास 66% का market share है. These are again compared to them small players. Strength of company. Leading insurance providing in India. सबको पता है, सब जानते हैं. LIC का नाम बोलो, सबको पता है life insurance है. Variety of life insurance plans to accommodate people. कौन सी वाली थी? सो टर्म इंश्योरेंस हो गया, दिखाता हूं। हाँ, टर्म इंश्योरेंस, लिंक्ड इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स,
पेंशन प्रोडक्ट्स, इतनी सारी टाइप्स की उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे, ताकि जो अकोमोडेट कर पाए फॉर उनकी डिफरेंट नीड्स के लिए. ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. सो ओमनी चैनल का मतलब यहाँ पे ये होता है दैट इट इज एक जगह से नहीं आ रहे. They will approach you by call, they will email you, they will send you an SMS, maybe social media marketing के through they will also try to sell you this thing. The largest asset manager in India. So जो भी इनके पास पैसा आता है, those people who take term insurance, life insurance, वो सारा पैसा जो इनके पास आता है, that is actually put into all these equity market distribution जो इन्होंने कर रखा है. So LIC के पास एक बहुत बड़ा amount, they are a shareholder in IT. If you know about it, ITC is Indian Tobacco Company, जिन्होंने नाम चेंज करके अब इंडियन टोबैको कंपनी कर दिया अपना. सो they have a very massive stake in ITC as well. Their management team has extensive experience and qualifications. So it's a good thing कि जो भी इनमें इन्वेस्ट कर रहा है वो इनकी मैनेजमेंट टीम स्मार्ट है, they are able to get things done. Now also there are certain risks that we need to know. कोविड-19 पैंडेमिक की रहते LIC को नुकसान हुआ, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. रिस्ट्रिक्टिंग द एबिलिटी ऑफ एजेंट्स टू सेल द प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते तो इनकी जो सेल्स हैं वो डिप हुई, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ फिजिकल इन पर्सन सेल्स होती हैं, जहाँ पे जो है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट अमंग पीपल. दे विल एक्चुअली कंसीडर टू बाय इंश्योरेंस, और आप जो है इसे डिजिटली खरीदना नहीं प्रेफर करेंगे इफ यू कम फ्रॉम अ टियर 2 बैकग्राउंड, टियर 3 सिटी, जहाँ पे आपको इंश्योरेंस के बारे में पता, आपको कोई चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, वो आए, आपको समझाए, आपको बताए, टू मेक इट फील ह्यूमन. आपका इंटरेक्शन इट हैज टू बी मच मोर ह्यूमन इन एग्जिस्टेंस. दैट्स व्हाई जो है इनकी सेल्स डिप हुई. Segregation of single consolidated life fund of the corporation into two separating funds. So participating policy holder fund and non-participating policy holder fund. So they also did one thing. If you are a policy holder with LIC, you will also get some amount of shares if you actually link your demat account with this thing. So if you link your demat account with LIC की policies के साथ, they will also give you some shares. उन्होंने ये अनाउंस किया था. दिस इज समथिंग कंप्लीटली न्यू, मैंने इसको पहली बार सुना है, मेरे को भी आइडिया नहीं था इस बारे में. Now, LIC is also in breach with SEBI, which is the Securities and Exchange Board of India regulation, which prohibits shareholder from holding 10% or more of shareholding or voting rights in any asset management company. तो यहाँ पे इनका 10% से ज़्यादा इनके पास in their holding और voting right with asset management company. Essentially जो है they are not just selling they are not just selling insurance, but the पैसा जो आता है उसको they also like put it in the stock market, the public market, and because of that, because they have a stake in so many other companies, they hold more than 10% in or voting rights within that company. Directly or indirectly 10% से जो है ना वो violate होता है. So voting rights in the asset management company or trustee of the mutual fund. So ये था पूरा LIC IPO के बारे में. सो आई होप आपको इससे इंफॉर्मेशन मिली हो. ये बहुत छोटा सा आर्टिकल था बिकॉज मैं इसका मे बी प्रोस्पेक्टस का इन फ्यूचर आई विल डू दिस. सो वो हम बात करेंगे. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, इफ यू हैव स्टेड इन द वीडियो टिल नाउ, आई विल टेल यू समथिंग विच यू मे नो और मे नॉट नो. क्या है वो चीज, देखना भी. Warren Buffett purchased 1 billion worth of shares. Yes. Activision, before Activision deal. ये देखो. Now I don't know how many of you guys know this thing. Warren Buffett purchased 1 billion worth of shares. Yes. Activision, before Activision deal. Okay. Okay. देखो. Now I don't know how many of you guys know this thing. Warren Buffett took $1 billion stake in Activision Blizzard before Microsoft deal. So it tells you how the rich makes money. And Warren Buffett is amongst those ultra super rich individuals that have so much money. They have so much insider info that we don't even know or even fathom
कि हम सोच भी नहीं सकते हाउ दीज डील्स वर्क. इतना ज्यादा इनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन है. एंड बिफोर जो हुई, दे डोंट कॉल हिम द ऑरेकल ऑफ ओमाहा फॉर नथिंग. सो they had acquired video game giant Activision worth $1 billion during the fourth quarter before the company was bought by Microsoft for $68.7 billion. Can you believe that? Because जब मैंने ये सुनी, I was like, it was a mind-blowing moment for me कि like think about कितना ज़्यादा benefit मिला वॉरेन बफे को by being friends with Bill Gates. और चलो ठीक है, बिल गेट्स का इसमें यहाँ पे नाम नहीं आएगा obviously because it was Nadella that took the acquisition deal that was responsible. But at the end of the day, I do not believe it at even one single point in time कि जो है ना, he did not know this thing. मैं इस चीज को मैं accept ही नहीं कर सकता. I am not going to play the devil's advocate here at all. The company is best known for producing video games such as Call of Duty and Warcraft. Massive जिससे इनको revenue मिलता है. And the stock surge means the firm Berkshire Hathaway is already set up for a tidy on-paper profit on its 14.6 million shares of Activision Blizzard, worth $975 million. मतलब आप लोग इमेजिन कर रहे हो, आई एम नॉट एबल टू इमेजिन दिस थिंग. अप्रोक्सीमेटली उनको जो प्रॉफिट मिला है $975 मिलियन का उन्हें प्रॉफिट मिल गया विद इन दैट टाइम फ्रेम. जब जनवरी 18 में ये डील हुई और दे एक्चुअली परचेज इट ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर. सो दिसंबर के टाइम पे, जो इनका फोर्थ क्वार्टर होता है दिसंबर, October, November, December. Buffett was long thought to be wary of investing in tech stocks and blue chip, usually takes stakes in blue chip firms, but has now is looking for increased opportunities in tech sector. The timing of acquisition raised eyebrows on decade-long friendship with Microsoft co-founder Bill Gates, who served on Berkshire Hathaway's board before stepping down in 2020. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, this is definitely insider info. ऐसी चीज अदरवाइज होती ही नहीं. एंड बफेट इज सेइंग दैट ही नेवर बॉट शेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स की जो है ना, टारगेट ऑफ सजेशन या एक्विजिशन दैट यू नो गेट्स ने बताया नहीं. लेकिन अब ही इज लाइक ठीक है, जो है सो है, करो ना करो, वी डोंट केयर, वी आर गोइंग टू मेक मनी ऑफ दिस थिंग. एंड ही सो यही है सारा का सारा. ये थी न्यूज जो मुझे आपको बतानी थी, और देखते हैं अगर कुछ और न्यूज मिलती है हमें तो. So यहाँ पे Warren Buffett is claiming that he had no idea and that Microsoft would actually take over the organization. But in a letter by Buffett office, that one of his $77 per share, their investment manager, one of its investment manager paid $79 per share for $14.7 million, acquiring 85% of his position in October, rest in November. Buffett said that he didn't have any prior knowledge what was going to happen for the franchises of Candy Crush, Call of Duty, or Warcraft. But he did not say made 1.1 billion, sent a letter that paid an average of $66 per share, not 77. ठीक है, so Buffett has said that they paid $66 per share for Activision stake, not 77. लेकिन उसको करेक्ट किया कि वो $78 पे है, traded at $78 per share. Buffett was no bonanza. The November में उनके share actually went down. Activision share actually had went down because of sexual harassment policies that was actually going on with the organization. And one of the smartest. Now, Charlie Munger is a very interesting fellow. The people that he likes and the people that he knows he's going to benefit from, he's very much openly saying that he's a very smart person. So if you know about this, like Charlie Munger and Elon Musk do not have a very good bonding. Charlie Munger has oftentimes taken a dig at Elon Musk, saying that he's not a smart person, or he's too arrogant in terms of वो क्या business कर रहा है and what all that he's doing. Okay. Now, but in this case, Charlie Munger is actually telling that Bobby Kotick is the smartest business executives I know. How do we know? We don't know that. तो ये थी वीडियो ऑन. I don't know आप लोगों को अभी तक इस बारे में पता लगा या नहीं पता लगा है, but that was it.
for this video. I hope that you enjoyed. I hope आप लोग को जो है ना कुछ नया सीखने को मिला, आप लोगों को जो है ना कुछ आइडिया पता लगा कि जो है ना कैसे पूरा इन्वेस्टमेंट होती है. Yeah. So that's it for this video. I hope you enjoyed this. And yeah, if you actually enjoyed this, please यार एक like ज़्यादा नहीं मांग रहा, only one like for this thing, and I will see you next time. नहीं, actually कल एक live है, कल एक live I will also do, but it's not going to be a financial live. It's going to be more of a life lessons thing that I've learned from a person that I admire a lot. Like अगर वो मुझे अपना mentee बना लेना, I would be the happiest person on the planet. I would be the happiest person on the planet. So I hope you enjoyed this video. If you did enjoy, please like it. It's your support means a lot. Your support truly means a lot. And I will see you for the next time. I will see you tomorrow. In fact, तो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं. I will see you tomorrow. And that's it. I'll see you. Bye. Shabba khair. Tada.